Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. We're jumping into some really interesting research today. But just before we properly kick off, I need to be super clear about something. The summary you're hearing right now, it was generated using a large language model based on the source article. And look, LLMs can give you a decent overview, right? But reading deeply, that really confirms that wisdom, empathy, true human understanding well, you don't just optimize for those things. They're lived experiences. They come from really engaging with complex ideas. So I genuinely urge you, whether you subscribe here or not, please make some time to read the original article. It's thoughtfully crafted, open access, published in Nature, a really prestigious journal. The link is right there in the show notes for you. It's worth it. Okay, so with that important point made, let's dive into the actual topic. We're talking about researchers, inventors, scientists, the people pushing the boundaries of knowledge and the choices they make about where to focus their work. Specifically, what happens when they decide to, pivot. To shift quite dramatically away from what they know, their expertise, into something new. Yeah, and that's such a critical topic today. Adaptability is, it's absolutely central to scientific progress, isn't it? Especially with new fields like, say, synthetic biology popping up, or these huge global challenges, climate change, pandemics. Right. Researchers and whole institutions are constantly facing these choices, Should we shift focus? How do we tackle these new things? Exactly. And it sounds simple from the outside, maybe. Yeah. Like, just work on the next big problem. But this Nature article, it takes a really rigorous look. Millions of papers, patents over decades, trying to understand the actual outcomes of these pivots. So our mission for this deep dive is to unpack what they found, because it's kind of striking. Why do these seemingly bold pivots often, struggle? Yeah. Why does sticking close to home seem safer? So first things first. For a study this massive, how do they even measure a pivot? How do you put a number on how far someone moves from their usual work? Yeah, that's the foundation, right? Yeah. And it's actually quite clever. They came up with a measurement framework using something called a cosine similarity metric. Cosine similarity. Okay, sounds a bit technical. Can you break that down simply? Sure. Think of it like comparing patterns, specifically the patterns of references someone cites. For research papers, they'd build a profile for an author based on the mix of journals they'd referenced in all their previous work. Okay, like their usual intellectual neighborhood. Exactly. Then, for a brand new paper, they compared the mix of journals referenced in that single paper to the author's historical pattern. Comparing the new footprint to their old path, kind of. That's a good way to put it. And for patents, since they don't reference journals in the same way, they use the technological field codes of the references cited in the patent. Either way, this comparison gives you a score, a number between 0 and 1. 0 to 1, okay. Yep. 0 means basically no pivot. The new work cites the same kind of sources, the same distribution as their past work. Right. And 1, that means a full pivot. They're drawing on a completely new set of references, totally different from their history. Got it. So low score, staying in your lane. High score, making a big leap into new territory based on the foundational stuff you're citing. Precisely. And their first look at the data, it showed pivoting isn't rare. It happens a lot in both science and patenting. You see this whole spread of scores between 0 and 1 in their charts. And they had a really timely finding, too, connected to COVID-19. Oh, yeah, the pandemic. Did that trigger a lot of these pivots? Absolutely. They found that COVID-19 papers, the ones published in that intense first year, 2020, they had a much larger median pivot size compared to non-COVID papers from the same year. How much larger? Significantly. The median for non-COVID papers was around little 0.60. For COVID papers, it jumped way up to A equals 0.82. Wow, that is a big difference. Really shows researchers mobilizing, moving into that new area fast. Yeah, it's clear evidence that the scientific community responded, and these large shifts, these pivots, really did happen to tackle that urgent crisis. Okay, so researchers can pivot, they do pivot, especially when needed. But let's unpack this main finding. What happens to the impact of their work when they make these bigger jumps? This is what they call the pivot penalty, right? And it's,
it's maybe not what you'd expect. That's right. This is the big one. The central, really robust finding from looking at, millions of papers and patents over decades. How many exactly? 25.8 million papers from 1970 to 2015, and 1.72 million U.S. patents from 1980 to 2015. Huge data sets. And across all of that, they found this consistent, substantial decline in the impact of the work the further the researcher pivoted. Decline in impact. Okay, how do they measure impact? Because, that can mean a few things. Good question. Their main measure was what they call a citation hit rate. So basically, it was a paper or patent in the top 5% of citations received by similar work. Papers in the same field, same year, or patents in the same tech class, same year. Okay. So controls for differences across fields and time. High impact means it really stood out in its specific context. Exactly. It's a standard way to identify the really influential work. So what did the data show? How did the hit rate change with pivot size? Okay, for papers, the work with the lowest pivot size researchers staying really close to home, expertise-wise, that work had a high impact 7.4% of the time, which is, notably higher than the 5% baseline you'd expect. Right, so sticking close pays off in citations. Seems like it, but the work with the highest pivot size, the biggest leaps, it only hit that top 5% category 2.2% of the time. Only 2.2%. Wow, that's a massive drop. It really is like a 56% reduction from the baseline average, barely a third of the hit rate compared to the low pivot work. It's a very clear, steep decline you see in their figure 2A. A huge penalty for pivoting far. Was it the same story for patents? Very much the same. A really similar pattern. A clear, steady decrease in impact as the pivot size went up. You see it in figure 2C. The lowest pivot patents, high impact 8.0% of the time, well above baseline. Highest pivot patents, only 3.8%. Still a big drop. And this isn't just some average effect across everyone, right? Like maybe some researchers are just better overall. They showed it happens even within one person's work. Absolutely. That's a crucial check they did. They use methods to control for individual effects. So essentially, comparing papers or patents from the same researcher. And figures 2B and second show that yes, even for a single scientist or inventor, when they made a larger pivot, that specific work was significantly less likely to be a high-impact hit compared to their own work that stayed closer to their usual area. Okay, so it really seems tied to the act of pivoting itself, not just who's doing it, even for really successful people. That's what the data strongly suggests. And here's another layer that's, pretty fascinating. This pivot penalty. It's not static. It's actually been getting stronger. It's been increasing over the last 50 years. Really? For both papers and patents? Yes, for both. You can see it in figures 2E and 2F. It's becoming progressively harder, it seems, to make a successful large pivot over time. And this isn't just in one or two fields. This trend holds true in over 90% of the scientific fields and technology classes they looked at. It's incredibly widespread. Wow. So the challenge is real, it affects individuals, it's everywhere, and it's getting worse. Okay. But is impact just about citations? Did they look at other ways work can be successful or useful? They did, yeah. They looked beyond just academic citations to get a broader picture. Things like practical use, publication success. It's in their extended data figures. What did they find there? Well, they saw a big decline in practical use, which they measured by seeing if a research paper was later cited in a patent, a sign it's feeding into technology. High pivot papers were 43% less likely to be cited in a future patent compared to low pivot papers. Almost half as likely to be used in an invention. That definitely speaks to maybe its practical relevance. It certainly suggests that. They also looked at publication success itself, using preprints, those papers people post online before formal peer review. And they found that higher pivot preprints, they got published in peer-reviewed journals at substantially lower rates. About a 35% decline for the highest pivot ones compared to the lowest. So it's not just that they don't get cited much after publication. Right. It's harder to even get them published in the first place if you've pivoted far. Exactly, which kind of hints that maybe peer reviewers are seeing substantive issues with the work itself when someone makes a really big disciplinary jump. Interesting. Any other measures? Yes. For patents, they looked at estimated market value, using things like stock price changes around when a patent is granted. And again, same story. The estimated market value linked to patented inventions went down steeply with pivot size, about a 29% decline for the highest pivot patents. Okay, so the picture is incredibly consistent then. Citations, practical use, and patents getting past peer review, market value. Bigger pivots generally lead to worse outcomes across the board. This pivot penalty is real, it's pervasive, it affects individuals, and it's growing.
That's the clear empirical finding, yes. Which leads us right to the next big question. Why? Why is this happening? The paper digs into a few potential explanations, drawing on existing ideas about how science works. Right. What sort of ideas did they explore? Well, one obvious one is about reputation and audience. You build up credibility in your field, people know your work. The Matthew effect, kind of. Yeah. Where being known helps you get noticed more. Exactly. Or the flip side, maybe typecasting. If you move too far outside your known niche, maybe the audience in the new area doesn't take you as seriously or doesn't even see your work. So the penalty might just be about being the outsider, the unknown quantity in a new community. It's a plausible idea, so they tested parts of it. They checked if the penalty vanished when researchers published in the same journal or field, but still showed a big pivot in their references. And did it? No, most of the penalty was still there. They also looked at impact measured by audiences who might not know the researcher personally, like patent citations or market value. Again, the penalty showed up strongly there too. So it doesn't seem to be just about crossing field boundaries or losing your immediate audience. What about career stage? Yeah. Maybe older established researchers face a bigger penalty because they have more reputation to lose by moving. They did find the penalty was slightly stronger for older researchers, which kind of fits with that idea. But, and this is important, the penalty was still very much there and substantial, even for early career researchers. Okay, so reputation might be a small piece, but it doesn't explain the whole thing. Seems not. It looks like it goes deeper than just audience effects. Okay, what about the classic explore versus exploit idea? Exploring new areas, big pivots is maybe riskier, more likely to fail. But perhaps it's also where the rare, super high-impact breakthroughs happen, the home runs. Yeah, the idea that exploration, while risky, might yield higher rewards occasionally compared to just exploiting your current knowledge. Does the data back that up? Are the biggest pivots responsible for the biggest breakthroughs, even if most fizzle out? This is actually one of the most surprising findings in the paper, I think. Counterintuitive, even. If exploration, meaning these high pivot projects, led to more breakthroughs, you'd expect them to be overrepresented at the very top end of impact, like the top 1%, or even the top 0.1% of papers. Makes sense. But that's not what they saw. No. The opposite, actually. High pivot research was strongly underrepresented at those highest impact levels. It was the low pivot work, staying close to expertise, that was significantly more likely to be a top 1% or top 0.1% hit, and the highest pivot work. It was way less likely, like 69%, 73% underrepresented in those elite tiers. Wow. Okay, so that really pushes against the simple idea that high risk equals high reward in terms of breakthroughs when pivoting. That's a major finding. It really is. It suggests there might be a more fundamental difficulty at play, which kind of aligns better with other ideas, ones that stress the value of deep, specialized expertise, building carefully on what's known. Like standing on the shoulders of giants. Exactly. Or Einstein's point about knowledge getting so vast that people have to specialize more and more. And that fits with the penalty getting worse over time, right? As fields get deeper and more complex, maybe it just gets harder for an outsider to jump in effectively. That's very consistent with the findings, yes. And remember the preprint result. That high pivot papers struggled more to even get published. Yeah, the 35% lower publication rate. That also points towards, real substantive issues with the work itself, likely because the researchers lacked the deep, specific expertise needed to meet the standards of the new field they pivoted into. There's another angle, too, related to how new work gets created. A lot of research views innovation as combining existing bits of knowledge, ideas, methods, data from prior work. And often, high-impact work involves taking familiar components and combining them in mostly standard ways, maybe with just a little twist of novelty. Okay. So how do pivots fit with that combination idea? Well, they looked at the kinds of combinations pivots create, specifically in the references cited. They measured both the novelty and the conventionality of these combinations, and they found that high pivot work does bring in more atypical combinations. It scores higher on novelty. That makes sense. You're bringing ideas from outside the usual pool. Yeah. Right. Definitely introducing freshness. But, and this is key, high pivot work scored distinctly low on conventionality. They were significantly less likely to use the kinds of knowledge combinations that are standard, well-established, common practice within the new field they pivoted into. Okay. So they bring new mixes, maybe from their old field,
but they seem to lack the grounding in how things are normally put together, the sort of standard recipes in the new field. That's exactly what it looks like. It's consistent with lacking the relevant conventional expertise to operate effectively. They might have novel ingredients, but perhaps not the local knowledge of how to combine them in a way that resonates or builds effectively within that new context. Okay, this is fascinating. But what about when the pivot isn't just a researcher's choice? What about external shocks? Things that force or strongly pull researchers into new areas. Does the penalty still apply then? Or does, like, a crisis override it? This feels really crucial. Yeah, they looked at exactly this. 2 types of external events. First, what they called push events, specifically dealing with paper retractions. So, like, if you built your work on a study that later gets pulled because it was wrong or fraudulent. Exactly. That effectively pushes you away from that line of work, right? Your foundation crumbled. So they studied researchers who had cited papers that were later retracted and compared what they did next to similar researchers who cited similar papers that weren't retracted. Okay, and what happened? Did the retraction make them pivot? Yes, significantly. The researchers who cited the retracted papers pivoted more in their subsequent work compared to the control groups. The data shows a clear increase in pivot size. And the more central that retracted paper was to their previous research, the bigger their pivot tended to be. So it was clearly a forced shift. And the impact. What happened, the impact of the work they did after being pushed into this new direction? This is the key part. Their subsequent work had lower impact compared to the control groups. The hit rate declined. So even when the pivot was basically forced on them by unreliable prior science, the pivot penalty still showed up. No free pass. Wow, okay, so that's the push. What about the pull? Like a massive societal need. Right. The second case was the huge pull event, the COVID-19 pandemic. This wasn't about bad science. It was this enormous, urgent need for research in a very specific, fast-moving area. And we already said scientists did pivot hard into COVID research. That median pivot size shot way up. They absolutely did. A remarkable mobilization, really. Scientists from all sorts of fields, not just virology or public health, shifted towards the pandemic. You see it in their figures. But despite the massive global focus, the intense interest, the fact that any COVID-related work likely got more attention. Don't tell me. The pivot penalty still applied, even within COVID research. It did. Even when you just look inside the pool of COVID-19 papers, those papers that represented a larger pivot for the author had significantly lower impact relative to the COVID papers that came from smaller pivots. So even working on the absolute hottest, most urgent topic imaginable, if you jumped further to get there, you still faced a relative penalty compared to others working on COVID who were closer to begin with. That's kind of stunning. So the penalty was big enough that for those making the largest leaps into COVID research, it basically wiped out the extra impact boost you might expect from working on such a critical topic. That's pretty much what their analysis suggests, yeah. Looking at figure 4E, the highest pivot COVID papers ended up with an impact rate roughly similar to median or smaller pivot non-COVID papers from that same time. The penalty offset the premium. So these external events, the push from retractions and the pull from the pandemic, they're really powerful tests. They show that, yes, researchers can and do respond to these pressures, they pivot. But the fundamental difficulty, the penalty tied to the size of that pivot, it still applies. Even in these really high-stakes situations, the intellectual hurdles seem pretty persistent. That is a really powerful and honestly maybe a bit sobering finding. You kind of hope that in a crisis, that ability to jump in would somehow bypass the usual difficulties. Yeah. Did they find anything that might lessen the penalty? Like maybe working with new collaborators who do have expertise in the new area? Or getting specific funding for the pivot? Yeah, they checked a bunch of those potential moderators. Things you'd think might help, right? Career stage, how productive the researcher usually is, team size, bringing in new co-authors, getting grant funding for the work. Did any of that help overcome the penalty? Nope. The finding was pretty starkly consistent. The pivot penalty persisted regardless of all those factors. Looking at their figure 4 through K, none of those things, not team size, not new collaborators, not funding, seemed to significantly reduce or eliminate the impact decline associated with large pivots. Wow. So even the usual supports we think help research success don't seem to overcome this fundamental challenge of pivoting far. That's what this particular large-scale analysis suggests, yeah. Okay, so let's zoom out. What does this all mean? What are the bigger implications of finding this pervasive, persistent, and apparently growing pivot penalty? For researchers themselves? For the institutions funding them? For science and society? Well, for individual researchers, it really highlights this tension, doesn't it?
Do you keep exploiting your deep expertise in a familiar area where you're likely to have impact, but maybe the returns are diminishing or the field is getting crowded? Or do you explore something new, knowing there's this significant risk, this penalty, especially for large jumps? The potential reward might seem high, but this data suggests big breakthroughs from huge pivots are actually less likely. It's a tough calculation. And for research organizations, universities, funding agencies, it really questions the effectiveness of just telling existing people or teams to suddenly switch gears dramatically into a whole new area. If asking people to make large pivots comes with this built-in impact penalty, maybe that's not the most efficient way to adapt or build capacity in a new field. So what's the alternative? Well, this finding might suggest that strategies like acqui-hires, strategically hiring individuals or teams who already have deep expertise in the target new area, might actually be a more effective way to quickly get up to speed and achieve impact in a novel domain. All right, bring in the native speakers instead of trying to force everyone to learn the new language instantly. Exactly. And thinking even bigger, for science and society, this suggests a kind of fundamental constraint on our collective ability to adapt really quickly to completely new challenges. If pivoting effectively is hard and penalized, then simply reacting when a crisis hits might not be enough. It really underlines the importance of investing proactively in a really diverse portfolio of scientific expertise before you know exactly what you'll need it for. Like Pastor said, chance favors only the prepared mind. Preparation here means having a wide range of prepared minds already working in diverse fields. Precisely that. It's almost like risk management. You need that broad base of expertise already established, covering many different areas, even niche ones, so that when the unexpected happens, the next pandemic, some new technological disruption, whatever it is, you have people ready who don't have to make a massive penalized pivot. They're already close. A paper even speculates this penalty might be a more general thing, Maybe it applies in economics and business and other complex systems where individuals or organizations try to make radical shifts into unfamiliar territory. It's a really thought-provoking study. It clearly shows how tough pivoting is and the immediate hit your work might take. But here's something maybe to leave you, the listener, thinking about. Something that builds on this. Okay, the penalty for the initial pivot is real, but what happens next? If a researcher makes that big leap, faces the penalty, and their first few papers in the new area don't have high impact, what then? Should they take that as a signal to retreat, go back to what they know, or should they see it as maybe the expected cost of entry and double down? Keep working, keep learning, try to build that new expertise and conventionality over time, hoping the penalty lessens as they become more of an insider in the new field. And how do we as institutions, as a research culture, create conditions that actually support that longer-term adaptation? How do we help people succeed after making a necessary but difficult pivot, even if the start is rocky? That seems like a really important question to wrestle with. Thank you for joining us for this deep dive into the complex world of research pivots. And please, one last reminder, do check out the show notes, click the link to the original Nature article. Reading it yourself will give you a depth and nuance that, even the best summary can't fully capture. Engaging with the source really does deepen understanding. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। শুরুতে একটা জরুরি কথা বলে নিই। আজকে আমরা যে আলোচনাটা করছি সেটা নেচার জার্নালে ছাপা একটা আর্টিকেলের সারসংক্ষেপ। আর এটা তৈরি হয়েছে একটা লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল বা LLM দিয়ে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আসল জ্ঞান, সহানুভূতি, মানুষের বোঝাপড়া এগুলো তো আর অপটিমাইজ করা যায় না। এগুলো জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আসে। তাই আমাদের শ্রোতাদের অনুরোধ করব, আপনারা চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন বা নাই করুন, প্লিজ একটু সময় বের করে রায়না হিল আর ওনার সহকর্মীদের লেখা এই অরিজিনাল ওপেন অ্যাক্সেস আর্টিকেলটা পড়বেন। খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ। লিঙ্কটা শো নোটসে দেওয়া আছে। আচ্ছা, আজকের বিষয়টায় আসি। আজ আমরা একটা বেশ ইন্টারেস্টিং জিনিস নিয়ে কথা বলবো। গবেষকরা যখন তাদের চেনা জগৎ ছেড়ে নিজেদের ফিল্ড ছেড়ে বেরিয়ে নতুন কিছুতে কাজ করতে যান, তখন কি হয়? কেন নতুন ফিল্ডে ঢোকাটা এত কঠিন মনে হতে পারে? আমরা নেচার জার্নালে প্রকাশিত দ্য পিভট পেনাল্টি ইন রিসার্চ এই পেপারটা নিয়ে মূলত আলোচনা করব। এটা লক্ষ লক্ষ সায়েন্টিফিক পেপার আর পেটেন্টেড ডেটা অ্যানালাইসিস করে লেখা। আমাদের লক্ষ্য হলো এই পিভট পেনাল্টি, দিক পরিবর্তনের যে একটা মাসুল দিতে হয় সেটা বোঝা। এটা কি, কেন হয়, এর গুরুত্বটাই বা কোথায়?
আচ্ছা, তাহলে একটু খুলে বলুন, এই পিভট পেনাল্টি বা দিক পরিবর্তনের মাসুল ব্যাপারটা ঠিক কি, মানে মূল ফাইন্ডিংটা কি? মূল ফাইন্ডিংটা বেশ সোজা সাপটা, কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। গবেষকরা তাদের আগের কাজের ফিল্ড থেকে যত দূরে যাচ্ছেন, মানে যত বেশি পিভট করছেন, তাদের নতুন কাজের ইম্প্যাক্ট বা প্রভাব, মানে ধরুন সাইটেশন সংখ্যা, পাবলিকেশনটা কতটা সফল হলো, বা ধরুন সেটার মার্কেট ভ্যালু ততটাই কমে যাচ্ছে। ব্যাপারটা অনেকটা নিজের যে মূল দক্ষতার জায়গা, সেই কমফর্ট জোন থেকে বেশি দূরে চলে যাওয়ার মতো। আচ্ছা। আর দেখুন, এটা কিন্তু এমন নয় যে অল্প একটু কমও। গবেষণাটা দেখাচ্ছে একটা খুব তীব্র আর একমুখী, মানে মোনোটোনিক পতন। যে কাজগুলো কম পিভট করে করা, মানে নিজের ফিল্ডের কাছাকাছি, সেগুলোর ইম্প্যাক্ট বেশি। ধরুন পেপারের ক্ষেত্রে প্রায় 48% বেশি হিট রেট পাওয়া গেছে। 48%? বেশ অনেকটা। হ্যাঁ, আর উল্টো দিকে যে কাজগুলো অনেক বেশি পিভট করে করা, সেগুলোর প্রভাব অনেক কম। পেপারের ক্ষেত্রে প্রায় 56% পর্যন্ত কমে যেতে দেখা গেছে। বাপরে। হ্যাঁ, আর এটা শুধু পেপার নয়, পেটেন্টের ক্ষেত্রেও সত্যি। দুটো ক্ষেত্রেই এই প্রভাবটা বেশ জোরালো। তার মানে নিজের চেনা গণ্ডি থেকে বেশি দূরে গেলেই কাজের প্রভাব এতটা কমে যাচ্ছে। আর আপনি কি বলছিলেন যে এটা সময়ের সাথে সাথে আরও বাড়ছে? হ্যাঁ, ঠিক তাই। গত 5 দশকে এই পেনাল্টি বা মাসুলটা আরও তীব্র হয়েছে। ও আচ্ছা। এটা থেকে একটা জিনিস আন্দাজ করা যায় যে জ্ঞানের জগৎটা ক্রমশ এতটাই স্পেশালাইজড হয়ে যাচ্ছে যে এক ফিল্ড থেকে অন্য ফিল্ডে সুইচ করাটা হয়তো সত্যিই কঠিন হয়ে পড়ছে। আর মজার ব্যাপার হলো, এই প্রবণতাটা প্রায় সব ফিল্ডেই দেখা গেছে। মানে 90%-এরও বেশি সায়েন্টিফিক ফিল্ড আর পেটেন্ট ক্যাটাগরিতে এটা সত্যি। কিন্তু কারণটা কি? কেন এমন হচ্ছে? এটা কি শুধুই যে নতুন ফিল্ডের লোকেরা গবেষকটাকে চেনে না বা তার আগের কাজ সম্পর্কে জানে না, তাই? দেখুন, খ্যাতি বা পরিচিতি, মানে রেপুটেশন, কিছুটা হয়তো ভূমিকা রাখে, অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু গবেষণাটা বলছে কারণটা তার থেকেও বেশি মৌলিক কিছু। আচ্ছা। হ্যাঁ, কারণ গবেষকরা যখন একই জার্নালে বা একই ধরনের ফিল্ডেই পাবলিশ করছেন, তখনও এই পেনাল্টিটা দেখা যাচ্ছে। তাই মনে হচ্ছে সমস্যাটা আসলে আইডিয়া জেনারেশন বা ধারণা তৈরির প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত। যে কাজগুলো খুব বেশি পিভট করে করা হয়, সেগুলোতে প্রায়শই নতুনত্ব বা নোভেলটি থাকে, মানে হয়তো দুটো আলাদা ফিল্ডের আইডিয়াকে মেলানো হচ্ছে। কিন্তু একই সাথে সেগুলোতে কনভেনশনালিটি বা প্রচলিত যে জ্ঞান বা পদ্ধতি, সেটার অভাব দেখা যায়। মানে নতুন ফিল্ডের যে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানের ভিত্তি, সেটার উপর হয়তো কাজটা দাঁড়াচ্ছে না। ব্যাপারটা তাহলে অনেকটা এরকম যে আমি নতুন জায়গায় গেলাম, কিন্তু সেখানকার টুলস বা নিয়মকানুন ভালো করে না জেনেই কিছু একটা বানাতে শুরু করলাম। একদম, খুব ভালো বলেছেন। অনেকটা সেরকমই। আর এটা শুধু সিনিয়র বা নামকরা গবেষকদের ক্ষেত্রে হচ্ছে তা নয়, ইয়াং রিসার্চার্সদের ক্ষেত্রেও একই জিনিস দেখা যাচ্ছে। তাই এটা শুধু পরিচিতি বা খ্যাতির ব্যাপার নয়। এখানেই তো বিষয়টা আরও ইন্টারেস্টিং হয়ে উঠছে। মানে এমন পরিস্থিতিও তো আসে যখন দিক পরিবর্তনটা একরকম জরুরি হয়ে পড়ে। যেমন ধরুন, যদি কোনো পেপার রিট্র্যাক্ট হয়, তখন গবেষকদের হয়তো ওই ফিল্ড থেকে একটু সরে আসতে হয়। অথবা ধরুন কোভিড-19-এর মতো একটা বিশাল ঘটনা ঘটলো, যা অনেককেই বাধ্য করলো বা টেনে আনলো একেবারে নতুন একটা রিসার্চ এরিয়াতে। তখনও কি এই একই পেনাল্টি লাগে? ঠিক এই প্রশ্নগুলোই কিন্তু গবেষণাটায় দেখা হয়েছে। দুটো পরিস্থিতি অ্যানালাইসিস করা হয়েছে। প্রথমত, পেপার রিট্র্যাকশনের পরে দেখা গেছে গবেষকরা স্বাভাবিকভাবেই একটু বেশি দিক পরিবর্তন করেছেন, মানে বেশি পিভট করেছেন। আর হ্যাঁ, তাদের পরের কাজে প্রভাবও কমে গেছে। তার মানে পেনাল্টিটা লেগেছে। হ্যাঁ। আর দ্বিতীয়ত, কোভিড-19-এর সময় যেটা হলো, বহু গবেষক যারা হয়তো ভাইরোলজি বা এপিডেমিওলজির লোক নন, তারাও কোভিড নিয়ে রিসার্চে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এটা তাদের মূল ফিল্ড থেকে বিশাল একটা পিভট ছিল অনেকের জন্য। তা তো বটেই। বা ইম্প্যাক্ট প্রিমিয়াম পেয়েছিল, মানে ভালো জার্নালে সহজে ছাপা হচ্ছিল। হ্যাঁ, সেটা দেখেছিলাম। কিন্তু পিভট পেনাল্টিটা তখনও কাজ করেছে যে কোভিড কাজগুলো গবেষকের মূল ফিল্ড থেকে অনেক দূরে ছিল, মানে হাই পিভট কাজ। সেগুলোর প্রভাব কম পিভট কোভিড কাজের চেয়ে কম ছিল। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে এই পেনাল্টিটা ওই প্রাথমিক প্রিমিয়ামটাকেও ছাপিয়ে গেছে বা নিউট্রালাইজ করে দিয়েছে। তাহলে এর বৃহত্তর তাৎপর্যটা কি দাঁড়াচ্ছে? এর মানে কি এই যে গবেষকদের নতুন ফিল্ডে যাওয়াই উচিত নয় বা নতুন কিছু চেষ্টা করাই উচিত নয়? না না, অগত্যা তা নয়, মোটেও তা নয়। কিন্তু এটা বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির জগতে অ্যাডাপ্টেশন বা মানিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে যে একটা বড় চ্যালেঞ্জ আছে, সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে।
এটা থেকে বোঝা যায় যে যখন কোনো সম্পূর্ণ নতুন সমস্যা সামনে আসে তখন শুধু আমাদের হাতে থাকা গবেষকদের উপর ভরসা করে বসে থাকাটা হয়তো যথেষ্ট নয় বা সবচেয়ে এফেক্টিভ উপায় নয়। হয়তো বাইরে থেকে বিশেষজ্ঞ নিয়ে আসা, যাকে বলে একই হায়ার, সেই স্ট্র্যাটেজিগুলো এক্ষেত্রে বেশি যুক্তিযুক্ত হতে পারে। আর এটা আরেকটা জিনিসের ওপর জোর দেয়, সেটা হলো একটা ডাইভার্স বা বৈচিত্র্যময় রিসার্চ পোর্টফোলিও মেনটেন করা। মানে বিভিন্ন দিকে আগে থেকে কিছুটা দক্ষতা তৈরি রাখা। একদম। বিভিন্ন ফিল্ডে যদি আগে থেকেই কিছুটা এক্সপার্টিজ বা প্রস্তুতি থাকে, তাহলে যখন হঠাৎ করে কোনো নতুন চ্যালেঞ্জ আসবে, ধরুন আরেকটা প্যান্ডেমিক বা ক্লাইমেট চেঞ্জের কোনো নতুন দিক, তখন সেটার মোকাবিলা করাটা অনেক সহজ আর কার্যকরী হবে। আইনস্টাইন যেমন বলেছিলেন না, যে জ্ঞান যত গভীর হচ্ছে ততই আমরা স্পেশালাইজেশনের দিকে ঠেলে যাচ্ছি, কারণ সবটা বোঝা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এই গবেষণাটা যেন সেটারই একটা প্রতিচ্ছবি দেখাচ্ছে। বেশ, তাহলে আজকের আলোচনার মূল কথাটা সংক্ষেপে এটাই দাঁড়াচ্ছে যে একটা বেশ উল্লেখযোগ্য এবং ক্রমবর্ধমান পিভট পেনাল্টি বা দিক পরিবর্তনের মাশুল আছে। এটা গবেষকদের জন্য এক ফিল্ড থেকে অন্য ফিল্ডে যাওয়া বা নতুন দিকে মোড় নেওয়াটা কঠিন করে তুলছে, আর এর প্রভাব পড়ছে সাইটেশন, পাবলিকেশন সাকসেস, এমনকি মার্কেট ভ্যালুর উপরেও। আবারও মনে করিয়ে দিই, আমাদের এই আলোচনাটা কিন্তু এলএলএম জেনারেটেড একটা সারসংক্ষেপ। বিষয়টা সম্পূর্ণ বারিকিয়া, মানে সূক্ষ্মতা, প্রজ্ঞা এবং গভীরতা বুঝতে হলে মূল নিচের আর্টিকেলটা পড়াটা খুব জরুরি। লিঙ্ক আবারও বলছি, শো নোটসে আছে। আর শেষ করার আগে শ্রোতাদের জন্য একটা প্রশ্ন রেখে যাই ভাবার জন্য। যদি এই দিক পরিবর্তন বা পিভট করাটা এত দামি হয়, মানে এর জন্য এত বড় মাশুল গুনতে হয়, অথচ বদলাতে থাকা পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নেওয়া বা অ্যাডাপ্টেশনটাও অপরিহার্য, তাহলে ব্যক্তি গবেষকরা এবং প্রতিষ্ঠানগুলো তারা কিভাবে এই পেনাল্টির ঝুঁকিটা কমিয়ে নতুন দিকে সফলভাবে এক্সপ্লোর করতে পারে, মানে এই সফল অন্বেষণকে আরও ভালোভাবে উৎসাহ দিতে পারে? কী ধরনের কাঠামো বা সাপোর্ট সিস্টেম এই স্পেশালাইজ দক্ষতার গভীরতা আর অন্যদিকে ব্যাপক অভিযোজনের যে প্রয়োজন, এই দুটোর মধ্যেকার গ্যাপটা পূরণ করতে পারে? এটা নিয়ে আপনারা ভাবতে পারেন। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। नमस्कार। आज की चर्चा शुरू करने से पहले एक जरूरी बात कहना चाहूंगा। हाँ, बताइए। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये नेचर जर्नल के एक लेख पर आधारित है, और इसका सारांश तैयार करने में एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी एलएलएम ने भी मदद की है। अच्छा। लेकिन देखिए, ज्ञान, सहानुभूति और जो मानवीय समझ होती है ना, वो किसी एल्गोरिदम से नहीं मिलती। उसे जीना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है। सही बात है। तो हमारी गुजारिश है, चाहे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, प्लीज शो नोट्स में लिंक है, नेचर का वो ओरिजिनल ओपन एक्सेस लेख जरूर पढ़ें। हाँ, वो बहुत जरूरी है, गहराई से समझना चाहिए। बिल्कुल। तो आज हम किस पर बात कर रहे हैं? रिसर्च की दुनिया में एक अनोखी चुनौती। अच्छा। जब रिसर्चर्स अपना रास्ता बदलते हैं तो उन्हें एक कीमत चुकानी पड़ती है, जिसे स्टडी में पिवट पेनल्टी कहा गया है। पिवट पेनल्टी? दिलचस्प नाम है ना? और इसके लिए हमने आधार बनाया है रायन हिल और उनके साथियों का नेचर में छपा एक बहुत बड़ा अध्ययन। हाँ, मैंने देखा ये पेपर, काफी डिटेल्ड है। हाँ, लाखों रिसर्च पेपर्स और पेटेंट्स को इन्होंने देखा है। और मकसद क्या था? यही समझना कि भाई जब साइंटिस्ट या इन्वेंटर अपनी लाइन से हटकर कुछ नया ट्राई करते हैं, हाँ, तो होता क्या है असल में, और उसके नतीजे क्या होते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। हाँ, देखते हैं क्या मिला इन्हें। तो सबसे चौंकाने वाली बात जो स्टडी से निकली वो ये कि एक पिवट पेनल्टी सच में है, और इसका असर काफी तगड़ा है। अच्छा, मतलब ये वाकई में होता है? हाँ, बिल्कुल। सोचिए, आप सालों लगाकर एक नए फील्ड में जा रहे हैं और पता चले कि आपके काम को कम तवज्जो मिल रही है सिस्टमैटिकली। ओह, ये स्टडी यही दिखाती है। कोई रिसर्चर अपने पिछले काम से जितना ज्यादा दूर जाता है, जितना बड़ा पिवट लेता है, हाँ, जितना बड़ा पिवट, उसके नए काम का असर, जैसे साइटेशन इम्पैक्ट, उतना ही कम होता जाता है। ये तो काफी चौंकाने वाला है। और ये सिर्फ एकेडमिक दुनिया में नहीं है, पेटेंट में भी यही हाल है। अच्छा, पेटेंट में भी? हाँ, विज्ञान और पेटेंटिंग दोनों में ये एक तरह का नियम सा बन गया है। और मजे की बात, पिछले 50 सालों में ये और सख्त हुआ है। और सख्त कैसे? आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े देखिए, जिन कामों में सबसे कम पिवट था, अपने पुराने काम से मिलते जुलते थे, हाँ, उनके हाई इम्पैक्ट होने की संभावना थी 7.4%। ये औसत से 48% ज्यादा है। ओके, ठीक है। लेकिन जिनमें सबसे ज्यादा पिवट था, बिल्कुल नई दिशा में, उनके हाई इम्पैक्ट होने की संभावना सिर्फ 2.2% रह गई। ये औसत से 56% कम है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा फर्क है।
7.4% बनाम 2.2%। है ना? और पेटेंट में भी यही पैटर्न दिखा। सबसे कम पिवट वाले 8.0% हाई इम्पैक्ट और सबसे ज्यादा वाले सिर्फ 3.8%। बिल्कुल। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, ये पेनाल्टी सिर्फ साइटेशन तक ही नहीं रुकती। अच्छा, और क्या? इसके असर और भी गहरे हैं। जैसे जो हाई पिवट वाले रिसर्च पेपर है ना, हाँ, उनके भविष्य के पेटेंट्स में साइट होने की संभावना 43% कम हो जाती है। ओह, तो टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट भी कम हो जाता है। हाँ, और यहाँ तक कि प्री प्रिंट्स, मतलब जो पेपर अभी पब्लिश नहीं हुए हैं, अगर उनमें पिवट ज्यादा है तो उनके असल में पब्लिश होने के चांस भी 35% कम थे। कमाल है, मतलब पब्लिकेशन तक में दिक्कत। बिल्कुल। और बिजनेस वर्ल्ड में भी असर है। हाई पिवट वाले पेटेंट्स का मार्केट वैल्यू, मतलब स्टॉक मार्केट के रिएक्शन के हिसाब से, वो भी 29% कम आंका गया। अच्छा, यानी निवेशक भी इसे रिस्की मानते हैं शायद। हाँ, ऐसा लगता है। तो अब सवाल ये है कि ये पिवट मापते कैसे हैं? हाँ, ये कैसे पता चलता कि पिवट ज्यादा है या कम? तो रिसर्चर्स ने एक मीट्रिक यूज किया, कोसाइन सिमिलैरिटी। कोसाइन सिमिलैरिटी, ये क्या चीज है? इसे आसान भाषा में समझें तो ये मापता है कि कोई नया काम रिसर्चर के पिछले कामों से कितना अलग है। कैसे मापता है? वो देखते हैं कि किन जर्नल्स या पेटेंट, टेक्नोलॉजी, कोड्स का रेफरेंस दिया गया है। अगर नए काम के रेफरेंस पुराने काम के रेफरेंस से बहुत अलग हैं, तो मतलब पिवट ज्यादा है। अच्छा, जैसे दो वेक्टर्स के बीच का एंगल? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। स्कोर 0 से 1 तक होता है। 0 मतलब कोई पिवट नहीं, बिल्कुल वही काम, और 1 मतलब पूरी तरह से अलग दिशा। समझ गया। तो ये मीट्रिक हमें कितना पिवट हुआ ये बताता है, लेकिन सवाल ये है कि ये पेनल्टी लगती क्यों है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। क्या ये सिर्फ रेपुटेशन का खेल है कि भाई नए मैदान में आपको कोई जानता नहीं? कुछ हद तक शायद, जैसे वो मैथ्यू इफेक्ट होता है ना। हाँ, कि जो फेमस है वो और फेमस होता जाता है। बिल्कुल। या फिर टाइप कास्टिंग, कि लोग आपको एक ही तरह के काम के लिए जानते हैं, तो शायद नए फील्ड में एक्सेप्टेंस मुश्किल हो। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है, क्योंकि ये पेनल्टी तब भी दिखती है, हाँ तब भी दिखती है, जब रिसर्चर उसी फील्ड या उसी जर्नल में पब्लिश कर रहे हों। अच्छा, तब तो रेपुटेशन वाला तर्क कमजोर पड़ गया। हाँ, और तब भी दिखती है जब बाहरी लोग जैसे निवेशक काम को आंक रहे हों। तो फिर और क्या कारण हो सकता है? ये शायद आइडिया जनरेशन, मतलब नए विचार सोचने और उन्हें लागू करने की असली मुश्किलों की तरफ इशारा करता है। मतलब? देखिए, ज्यादा पिवट वाले काम में अक्सर नए अनकन्वेंशनल कॉम्बिनेशंस तो होते हैं, नॉवेल्टी जिसे कहते हैं। हाँ, कुछ हटके। हाँ, हटके। लेकिन उनमें शायद स्थापित ज्ञान, जो कन्वेंशनल तरीके हैं, उनकी कमी होती है। अच्छा, तो ऐसा लगता है कि अपनी एक्सपर्टाइज के दायरे से बाहर जाकर वाकई में असरदार काम करना मुश्किल है। इसमें एक असली चैलेंज है। यहाँ बात और भी पेचीदा हो जाती है। कैसे? ये उस जाने माने सिद्धांत को चुनौती देता है, एक्सप्लोर बनाम एक्सप्लॉइट। हाँ, कि नई चीजें खोजें या जो पता है उसी को और बेहतर करें। बिल्कुल। आमतौर पर मानते हैं कि एक्सप्लोर करना यानी नई राहें खोजना रिस्की है, पर बड़े इनाम भी दे सकता है ना? हाँ, माना तो यही जाता है, ब्रेक थ्रू वहीं से आता है। लेकिन ये डेटा क्या दिखा रहा है कि ज्यादा पिवट वाला काम यानी एक्सप्लोरेशन वाला काम, वो तो टॉप लेवल पर भी, यानी टॉप 1% या 0.1% इम्पैक्ट वाले कामों में भी कम नजर आता है। सच में? ये तो पूरी सोच पर ही सवाल उठाता है ना? बहुत चौंकाने वाली बात है। अच्छा, रिसर्चर्स ने बाहरी घटनाओं के असर को भी देखा। बाहरी घटनाएं? जैसे पुश इवेंट्स। मान लीजिए कोई पेपर किसी वजह से वापस ले लिया गया, रिट्रैक्ट हो गया। ओके। तो जिन रिसर्चर्स ने उसे साइट किया था, वो लोग ज्यादा पिवट करते हैं, मतलब नई दिशा में जाते हैं, पर उनके अगले काम का इम्पैक्ट कम हो जाता है। ओह, मतलब धक्का लगने पर दिशा बदलते हैं, पर फिर पेनल्टी लगती है। हाँ, और एक बड़ी पुल घटना का भी अध्ययन हुआ। पुल घटना? कोविड-19 महामारी। हाँ, वो तो बहुत बड़ा इवेंट था, पूरी दुनिया हिल गई थी। और रिसर्च की दुनिया भी। बिल्कुल। विज्ञान के लगभग हर फील्ड से लोग कोविड पर रिसर्च करने लगे थे। काम से? हाँ, बिल्कुल। डेटा भी यही दिखाता है। उनका औसत पिवट मान, जिसे फाई कहते हैं, वो 0.82 था, जबकि नॉन कोविड रिसर्च का औसत 0.60 के आसपास था। ये तो काफी बड़ा जंप है ना? हाँ, बहुत बड़ा। ज्यादातर लोग अपने फील्ड से काफी दूर आकर काम कर रहे थे। तो नतीजा क्या निकला? क्या कोविड रिसर्च में भी पिवट पेनल्टी लगी? हाँ, यही तो इंटरेस्टिंग है। देखिए, कोविड पेपर्स को एक तरह का इम्पैक्ट प्रीमियम तो मिला। मतलब
टॉपिक इतना जरूरी था कि वो हाई इम्पैक्ट जर्नल्स में आसानी से छप गए। हाँ, ये तो हुआ था। लेकिन पिवट पेनल्टी वहां भी मौजूद थी। अच्छा, कैसे? जिन कोविड पेपर्स में पिवट ज्यादा था, मतलब रिसर्चर अपने मूल फील्ड से बहुत दूर थे, उनका इम्पैक्ट उन कोविड पेपर्स से काफी कम था जिनमें पिवट कम था, भले वो सब हाई इम्पैक्ट जर्नल में छपे हों। अरे वाह, यानी टॉपिक की अर्जेंसी के बावजूद पिवट की कीमत चुकानी पड़े। बिल्कुल। और सबसे अहम बात यह है कि ये पेनल्टी हर जगह दिखती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि रिसर्चर अपने करियर में कहाँ है, टीम कितनी बड़ी है, नए लोगों के साथ काम कर रहा है या फंडिंग कितनी है। मतलब ये काफी फंडामेंटल चैलेंज है। हाँ, ये दिखाता है कि नई दिशाओं में अडेप्ट करना, ढलना विज्ञान के लिए एक गहरी और लगातार बनी रहने वाली चुनौती है। तो कुल मिलाकर ये अध्ययन हमें क्या बताता है? यही कि रिसर्च में दिशा बदलना सिस्टमैटिकली मुश्किल है। और मुश्किल होता जा रहा है। हाँ, और वक्त के साथ ये और कठिन होता जा रहा है। और इसका असर सिर्फ इंडिविजुअल रिसर्च पर नहीं है। नहीं, इसका असर संस्थानों पर है और पूरी साइंस की एबिलिटी पर है कि वो नई चुनौतियों का सामना कैसे करेगी। सही बात है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है ना? क्या? कि अगर अपनी जानी पहचानी एक्सपर्टीज से हटना इतना पनिशिंग है, इतना दंडनीय है, हाँ, तो क्या विज्ञान और समाज के लिए ये ज्यादा जरूरी नहीं हो जाता कि वो भविष्य की अनिश्चित चुनौतियों से निपटने के लिए शुरू से ही, मतलब पहले से ही अलग अलग तरह की विशेषज्ञताओं में निवेश करे, एक डाइवर्स पोर्टफोलियो बनाए एक्सपर्ट्स का, ताकि जरूरत पड़ने पे सही लोग तैयार मिले, बजाय इसके कि मौजूदा एक्सपर्ट्स को मुश्किल पिवट लेना पड़े। बिल्कुल, ताकि अडेप्टेशन की जरूरत कम पड़े क्योंकि आपके पास पहले से ही वाइड रेंज के एक्सपर्ट्स हों। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो इस गहरी चर्चा की और बारीकियों को समझने के लिए हाँ, लोगों को वो ओरिजिनल पेपर जरूर पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, शो नोट्स में लिंक है, नेचर का वो मूल लेख पढ़ना ना भूलें।